You have some chairs for the ladies. Oh, Habli, Mataji, welcome. She is good with English. About yeah. Okay. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Girvanadari Girvanadari Yasodanandana Braja Janaranjana Yasodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Girvanadari Girvanadari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada
Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jayom Vishnu Paraparamhamsa Parvakacharya Asatara Shishimadi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Jayom Vishnu Paraparamhamsa Parvakacharya Asatara Shishimad Bhaktivedanta Saraswati Guru Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Kodi Vaishnavinda Ki Jai. Namacharya Haridas Thakur Ki Jai. Prem Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jaya Vedi Gadara Srivasadi Gaura Bhakti Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopi Gopinath Samakunda Radha Kundi Givi Govardhana Ki Jai. Vrindavan Dhamma Ki Jai. Mathura Dhamma Ki Jai. Navadipa Dhamma Ki Jai. Tuksi Maharani Ki Jai. Go Premanandi Hari Om. O glorious assembled devotees, O glorious assembled devotees, O glorious assembled devotees, O glorious Shikaro Granga, O glorious Srila Prabhupada, Savior of the whole world, Ki Jai. Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale, Srimati Bhakti Vedanta Swami Yuti Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pachani, Neve Sisa Sunyavadi Paskachanda Satarani. Thank you, ladies, for coming. Bhagavati's bringing me the book, which is a bit late. Thank you. You want to give me your hotspot? Someone can give me your hotspot. Okay. You do it. Hotspot. Good. Right. Okay. So we're reading from the teachings of Queen Kunti by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Yes, you can. हम लोग क्वीन कुंती से पढ़ेंगे जो हिज डिवाइन ग्रेस वेदांत श्रील प्रभुपाद ने लिखा है बुक. And we're reading from chapter 3, The Most Intelligent Woman. और हम चैप्टर 3 से पढ़ रहे हैं सबसे बुद्धिमान महिलाएं. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नमो भगवते वासुदेवाय. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. So I'll just read the Sanskrit and then we'll read the verse. Tata Paramahamsanam Mohinam Amalatmanam
Bhakti Yoga Vedantartam Tatapasyema Histriyam. So if you want to look it up on your phones, you can. It's Teachings of Queen Kunti, the third chapter, the most intelligent women, and then you can have it in India as well. So, oh, we have it now. Okay. Srimad Bhagavatam 1:8-20. You yourself descended to propagate the transcendental science of devotional service unto the hearts of the advanced transcendentalists and mental speculators, who are purified by being able to discriminate between matter and spirit. How then can we women know you perfectly? Srimad Bhagavatam 1:8-20. Pulpit by Srila Prabhupada. Even the greatest philosophical speculators cannot have access to the region of the Lord. It is said in the Upanishads that the supreme truth, the absolute personality of Godhead, is beyond the range of the thinking power of the greatest philosopher. He is unknowingly by great learning or by greatest brain. He is knowable only by one who has his mercy. So you better read the translation and that little bit I read. in Hindi. Yeah. तो हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, सबसे इंटेलिजेंट महिला। तो इसमें जो क्वीन कुंती हैं वो भगवान से प्रे कर रही हैं कि आप जो हैं वो ट्रांसेंडेंटल जो डिवोशनल सर्विस है उसका साइंस सबको बताने आए हैं यहाँ पे भगवान। और जो मेंटल स्पेक्युलेटर्स है जो अपने मनगढ़ंत ज्ञान बताते हैं, जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं, उनके भी समझ में आप नहीं आ पाते हैं। और मैटर और स्पिरिट में वो लोग भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि क्या आत्मा है और क्या पदार्थ है। तो हम जो महिलाएं हैं वो आपको कैसे समझ पाएंगी? तो क्वीन कुंती अपने आप को लोअर पोजीशन पे रख रही हैं। तो श्रील प्रभुपाद इसमें परपट में बता रहे हैं कि ग्रेट फिलोसफिकल स्पेक्युलेटर्स जो हैं उनको भी एक्सेस नहीं है भगवान को समझने का। और उपनिषद में कहा गया है कि जो सुप्रीम ट्रुथ है, जो सत्य है, सत्यम, वो कौन है? भगवान कृष्ण है, एब्सोल्यूट पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। वो थिंकिंग पावर के बियॉन्ड है, हम अपने माइंड से उनको नहीं समझ सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट ब्रेन से वो समझे नहीं जा सकते हैं। सिर्फ भगवान को वही समझ सकते हैं जिनके ऊपर उनकी मर्सी हो। Others may go on thinking about him for years together, yet he is unknowable. This very fact is corroborated by the Queen, who is playing the part of an innocent woman. Women in general are unable to speculate like philosophers, but they are blessed by the Lord because they believe at once in the superiority and the almightiness of the Lord, and thus they offer obeisances without reservation. The Lord is so kind that he does not show special favor only to one who is a great philosopher. He knows the sincerity of purpose. For this reason only, women generally assemble in great number in any sort of religious function. In every country, in every sect of religion, it appears that women are more interested than men. This simplicity of acceptance of the Lord's authority is more effective than showy, insincere religious fervor. इसमें आगे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो कुंती महारानी आगे बोलती हैं, जो एक इनोसेंट वुमेन की तरह एक्ट कर रही हैं कि हम वुमेन आपको कैसे समझ सकते हैं, जबकि जो कुंती महारानी है वो तो बहुत ज़्यादा उनका जो नाम है वो शुद्ध भक्तों में आता है, फिर भी वो अपने आप को इस लोअर पोजीशन पे रख रही हैं और क्वेश्चन कर रही हैं।
तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो महिलाएं होती हैं वो इन जनरल बड़े-बड़े फिलोसोफर्स जैसे स्पेकुलेट नहीं करती हैं। महिलाएं बहुत सिंपल, बहुत सिंसियर होते हैं। तो वो क्योंकि वो भगवान को बहुत, उनकी ग्रेटनेस को, उनकी सुपेरियरिटी को बहुत ईज़िली वो अपना लेती हैं कि हाँ, भगवान बहुत ग्रेट हैं। इसीलिए भगवान उनको बहुत ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करते हैं विमेन को। क्योंकि भगवान जो हैं वो ग्रेट फिलोसोफर्स के थ्रू जाने नहीं जा सकते हैं, भगवान सिंसेरिटी के थ्रू जाने जा सकते हैं। अगर कोई बहुत सिंसियर है तो भगवान अपने आप को रिवील कर देते हैं। तो यही रीज़न है कि जो महिलाएं हैं वो किसी भी रिलीजियस फंक्शन में आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा महिलाएं होती हैं, ऐसा प्रभुपाद बोल रहे हैं। तो विमेन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है रिलीजियस चीज़ों में मेन के कंपैरिजन में। तो ये जो सिंप्लिसिटी ऑफ एक्सेप्टेंस है ना, भगवान को बहुत जल्दी सिंपल तरीके से अपना लेना, ये जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव है। इसीलिए महिलाओं पे ज़्यादा ब्लेसिंग्स होती है भगवान की। This is a very nice verse. I love to give the class out of this book to the ladies. Because Queen Kunti, she was a most intelligent woman. She was Krishna's auntie, and she was the mother of the Pandavas. So when her husband was going to die, then her co-wife, they had to decide who was going to stay behind and who was going to enter the fire. And so Madri, she decided together with her co-wife Kunti that she would enter the fire. So she's been taking care of her 5 children by herself. And Krishna, he has special favor for women and children. You know, you see, Krishna doesn't see the body, he sees the heart. You know? So like Prabhupada said, in many religious organizations you go there and there's more women than there is men because they're going there sincerely from their heart and they love God, whether they're a Christian, a Muslim, a Jehovah, a Buddhist. You'll find that the ladies are all there and they're very devoted, isn't it? No, when I've been traveling now, many times the women were more prominent than the men coming to the program like that, isn't it? Sometimes if they had little children, they couldn't come so easy, but some of them even brought the children to the Mangalati. So Krishna sees the heart. He's not interested in someone. One time, this devotee was giving a class. I couldn't follow it. He was uh, saying so many Sanskrit verses. He got off track from the meaning of the whole class, and you couldn't follow. Going scratching your head. What did he mean there? And he was just sitting there going, this verse after this verse after this verse. Yes. But I think, I mean, it's good. We have to know the verses and we have to know the meaning of the verses. But you should speak from your heart. And I think ladies, they speak from their heart, isn't it? So you cannot say women are more superior than men when it comes to the point. A woman can do something a man can't do. And what is that? What can woman do that a man can't do? Begetting children. What's that? You have to talk loud. Krishna conscious children she can beget. She can give birth to a baby, right? How many men can do that? None. So they have no idea what that experience is like and how much love that the woman has for her baby. And when she's given birth to that baby, she so wants to give so much love to that baby. Sometimes the men become jealous. Have you heard of that? The men actually become jealous because the wife is giving the baby more attention than them.
But why wouldn't you? But he just, if he was a good husband, he would give that baby so much attention and so much love. Also, he would also share in that. So this is intelligence, right? And Prabhupada, he said, there's a story. One of my godbrothers, he came to Prabhupada one day. He said, well, Prabhupada said, why your wife always looks so drab? And he said, oh, Prabhupada, she likes them so saris, those colors. Prabhupada said, she looks so drab. If you don't give her gifts and give her nice things to wear, one day she will leave you. Any translation? या तो माता जी को ये बुक से पढ़ाना हमेशा बहुत अच्छा लगता है महिलाओं को। इट्स अ वेरी गुड बुक। तो माता जी वही शेयर कर रही हैं कि कैसे जो क्वीन कुंती थी और माधवी थी, तो उनमें से जब उनके पति जो हैं उनका देहांत हुआ था, तो दोनों में से एक जो थी वो सती हुई थी, माधवी जो थी वो सती हुई थी और क्वीन कुंती ने डिसाइड किया था कि वो पाँचों जो पांडव हैं उनका भरण-पोषण और वो सब करेंगी। तो श्रील प्रभुपाद माता जी जैसे बता रही हैं कि कैसे जो विमेन हैं वो हार्ट जानती हैं, है ना? कृष्णा जो है वो भी बॉडी नहीं देखते हैं, वो हार्ट देखते हैं। वैसे विमेन जो हैं उनके पास हार्ट होता है। तो माता जी ने इंसिडेंट शेयर किया कि कैसे जो एक लेक्चर हो रहा था उसमें वो श्लोक के बाद श्लोक, श्लोक के बाद श्लोक बोलते चले जा रहे थे और उसमें सब अपना सर खुजा रहे थे कि ये क्या बोल रहे हैं, है ना? कुछ समझ नहीं आ रहा है। इट्स अच्छी बात है कि श्लोक बोल रहे हैं और उसका मीनिंग बता रहे हैं, पर श्लोक के साथ-साथ हमें माता जी बता रही हैं कि हम जब बोलते हैं तो हमें अपने हृदय से बोलना चाहिए, है ना? ताकि वो सामने वाले के हृदय तक पहुँचे और ये भगवान को बात बहुत अच्छी लगती है। और फिर माताजी बता रही हैं कि कैसे जो विमेन होती हैं वो क्या काम ऐसा बोला जाता है ना कि विमेन आर मोर सुपीरियर। विमेन जो हैं जो महिलाएँ हैं वो पुरुषों से बहुत ज़्यादा ऊपर हैं। बट एक्चुअली में महिलाएँ वो कर सकती हैं जो पुरुष नहीं कर सकते हैं। कृष्णा कॉन्शियस बच्चे पैदा करना, है ना? बच्चों को पालन-पोषण करना। तो माताजी उसमें एक इंसिडेंट बता रही है कि श्रील प्रभुपाद ने एक दंपत्ति थे, उनसे पूछा था कि आपकी वाइफ हमेशा इतने बेरंग ऐसे कपड़े क्यों पहनती हैं? मतलब बेरंग से क्यों हैं? अगर आप इनको गिफ्ट नहीं देंगे तो एक दिन वो आपको छोड़ के चली जाएँगी। तो इस तरीके से माताजी ने बताया। Read a little more. Kunti Devi prayed to the Lord very submissively, and this is a symptom of a Vaishnava. The Lord Krishna had come to Kunti Devi to offer respect to her by taking the dust off her feet. Because Krishna considered Kunti Devi his aunt, he used to touch her feet. But although Kunti Devi, a great devotee, was in such an exalted position, practically on the level of Yasodamaya, Krishna's mother, she was so submissive that she prayed, Krishna, you are meant to be understood by the Paramahamsas, the most advanced transcendentalists, and I am a woman, so how can I see you? तो इसमें प्रभुपाद जैसे लिख रहे हैं कि कुंती देवी थी कितना हम्बली और सबमिसिवली बहुत दैन्य भाव से भगवान को प्रे कर रही हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि एक वैष्णव की ये पहचान है कि वो बहुत दैन्य भाव में होते हैं। तो लॉर्ड कृष्ण जो भगवान हैं वो कुंती देवी के पैर छूने आए थे, है ना? कुंती देवी जो है उनकी आंट हैं। पर जो कुंती देवी हैं वो अपने आप को क्या बोल रही हैं? कुंती देवी जबकि यशोदा मैया के लेवल पे हैं भगवान के लिए, भगवान उनके पैर छूने आए थे। पर कुंती देवी बोल रही हैं कि आप तो परमहंस के द्वारा भी जाने नहीं जा सकते हो, बड़े-बड़े मुनियों के द्वारा भी जाने नहीं जा सकते हो। तो मैं तो छोटी-सी मतलब मैं एक बहुत लो लेवल में एक वुमन हूँ, एक महिला हूँ, तो मैं आपको कैसे समझ पाऊँगी? अपने आप को बहुत दैन्य भाव में बता रही हूँ।
According to the Vedic system, there are 4 divisions, social divisions. The highest members of the social order are the Brahmanas, those who are intelligent, and then come the Kshatriyas, military men and administrators, the Vaishyas, farmers and businessmen, and finally the Sudris, ordinary laborers. One place in the system is determined by one's qualities and work, guna karma. The Bhagavad Gita mentions Striyo Vaishyas Tata Sudra, and the Srimad Bhagavatam speaks of Sri Sudraban Dvijabandhana. According to these references, women, Sudras, and Dvijabandhanas are considered to belong to the same category. The word Vijabandha refers to one who is born in an exalted Brahmin or Kshatriya family and but who has no qualifications of his own. One's social standings, according to the Vedic system, is determined by one's qualifications. This is very practical. Suppose a man is born the son of a high court judge. This does not mean that he himself is also a high court judge. Yet because one happens to take birth in a Brahmana family, even if he has no qualifications and is rascal number 1, he claims to be a Brahmana, and although his qualifications are less than those of a Sudra, people accept him as a Brahmana. This has caused the downfall of the Vedic civilization. The Brahmanas in India are sometimes very much against my movement because I train and accept Brahmanas from Europe and America. But we do not care about their arguments, nor will any other reasonable man. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, in every town, city, and village of this world, the Krishna conscious movement will be preached. How is it then that the Europeans and Americans will not become Brahmins? In fact, one who comes to Krishna consciousness has already surpassed Brahmanism, as stated in the Bhagavad Gita. तो इसमें आगे प्रभुपाद बता रहे हैं कि वैदिक सिस्टम जो था उसमें 4 भाग किए गए। 4 भाग कौन-कौन से? चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये जो 4 भाग किए गए वो गुण और कर्म के हिसाब से किए गए कि जिसका जैसा गुण है और जिसका जैसा कर्म है उस हिसाब से वो उस कैटेगरी में फॉल होगा। और जो भगवत गीता है वो भी बोलती है स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रो। श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम। तो द्विज बंधु कौन होते हैं? वो होते हैं जो बहुत ऊंचे उसमें, जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय में जन्म तो लिए हैं पर उनका क्वालिफिकेशन वैसा नहीं है, तो उनको द्विज बंधु कहा जाता है। यानी वो इतना अच्छा क्वालिफिकेशन नहीं रखते ब्राह्मण क्षत्रिय जैसा। तो इन तीनों को एक कैटेगरी में रखा गया है। किसको? महिला को, शूद्र को और द्विज बंधु को, कि ये इतना अंडरस्टैंड नहीं कर सकते शास्त्रों को, ऐसा बताया जाता है। तो ये गुण और कर्मों के हिसाब से विभाजन है। इसमें प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं कि सपोज एक कोई हाई कोर्ट का जज है, अब उनका जो पुत्र है वो भी अपने आप को अगर बोलने लग जाए कि मैं हाई कोर्ट का जज हूँ, तो ये नहीं होगा ना। उसके पास वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उस तरीके की पढ़ाई होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कि वो हाई कोर्ट का जज बन पाए। वैसे ही कोई ब्राह्मण की फैमिली में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं हो जाता। अगर उसके पास ब्राह्मण का क्वालिफिकेशन नहीं है तो ऐसा ही होने लग गया कि जो ब्राह्मण का क्वालिफिकेशन नहीं भी रखते हैं, जो ब्राह्मण के गुण नहीं भी रखते हैं, वो अपने आप को ब्राह्मण बोलने लग गए। उसकी वजह से क्या हुआ, वैदिक जो हमारा पूरा सनातन धर्म था, वैदिक था, वो फॉल होने लग गया धीरे-धीरे। अब इसमें प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कभी-कभी लोग मेरे बहुत विपरीत बोलते हैं कि मैंने अंग्रेज़ों को भी ब्राह्मण बना दिया है। बट एक्चुअल में श्री चैतन्य महाप्रभु ने खुद ही कहा था कि उनका जो ये जो कृष्णा कॉन्शियस कृष्ण भावनामृत है, वो हर टाउन में, हर शहर में, हर गाँव में इसका प्रचार होगा, है ना? तो इससे बाहर तो नहीं आता है। हर टाउन, हर सिटी, मतलब अगर सब जगह प्रचार होगा तो यूरोप, अमेरिका सब उसके अंदर ही आ गया। तो वैसा ही
तो वहाँ से क्यों ब्राह्मण नहीं बन सकते हैं? अगर उनके पास क्वालिफिकेशन है तो वो ब्राह्मण बन सकते हैं, है ना? कृष्णा कॉन्शियस इवन ब्राह्मणिज्म के भी ऊपर है, ब्राह्मणिज्म के ऊपर वैष्णविज्म आता है। So Krishna is in everyone's heart, right? He's in the heart of the ladies, he's in the heart of the men, and he's in the heart of the chicken, he's in the heart of the dog, and the heart of the bug. My little granddaughter, I went for a walk with her to the store, and on the way we were talking about that Krishna is in everyone's heart. And she said, Grandma, is Krishna in the bug's heart? I said, yes. Is Krishna in the tree's heart? I said, yes. And I said, she said, is Krishna in my heart? And I said, yes. The little girl walking along to the store, all the way there and all the way back, asking me about where Krishna was. So it's true, Krishna's in the heart. So he doesn't discriminate that you are in a woman's body or a man's body. He's only interested in how much you love him, right? And how much you are loving him. And you love him by doing service to him. You can talk to him. We went there to Jagannath. I was talking to them today and telling them how we made this nice garden out there for that. But when Janmashtami came, I made the garden last time, but when Janmashtami came, the people that came here didn't appreciate. They stood all over the garden. When I came back, I said, oh, where is this plant and where is that plant? And then later the boy, he came and he told me, I was trying so hard to look after your garden, Mataji, but when Janmashtami came, the people came so not enthusiastic, we wouldn't call them, so much in a hurry to get into the temple that they stood all over the garden. And some of the plants didn't survive. So we put some more plants in there today. And what did we put in that little crazy plant lady? We put a little pot with crazy plant lady. Do not step on this plant. This was Krishna's garden. And we made it all nice, and we put the cow dung on there and more earth and watered it. So when you come to the temple, if you want to help us look after it, we will keep it nice. We can even put a little fence in front of it. I suggested that last time, but it didn't happen. So if you want to help in any way, yeah. And most of the flowers we bought today, we went to the nursery and we smelt every flower. We were looking for the fragrant ones. And there's this little bush. I've seen many of those bushes, and people pick them. But one day I took one and smelt it, and I thought, why are they picking them and they don't even smell? And Prabhupada told us that a tree that doesn't produce fragrant flowers is useless. So whenever you go to buy flowers or give uh, plants in your garden, make sure they are fragrant. And when you offer the flowers to Krishna on your altar or arti, they should be fragrant. Huh? Yeah, very nice service. Yeah, very nice service. So Krishna will see the love in your heart that you want to do something. Because what is the thing you can do the most? If you're going, best thing you can do, you're going to someone's birthday party or you're staying at their house and you want to do something for them because they so nicely have looked after you. So I always look, oh, the washing basket is broken, I will go and buy another one. Or oh, they haven't got any good pegs, so I will go and buy the stainless steel pegs because the other ones are breaking, falling on the ground. Yeah? So this is consciousness, being conscious. And that's what Krishna wants.
He wants us to be conscious of him. He is in our heart, and he's just interested in the love, isn't he? He's not interested that you, even if you build him big temple, because you want to show everyone, oh, look at Mr. So-and-so, he built this big temple. But if you don't build that temple with love and do it for Krishna, then the benefit is not happening. Sorry. तो माता जी बता रहे हैं कि कैसे भगवान जो हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि आप कुत्ते की बॉडी में हैं या प्लांट की बॉडी में हैं। भगवान बॉडी नहीं देखते हैं, या आप या आप महिला हैं या पुरुष हैं। भगवान हृदय देखते हैं, और भगवान हर किसी के हृदय में, चाहे वो एक कुत्ता हो, एक प्लांट हो। तो माता जी एक इंसिडेंट शेयर कर रही हैं कि उनकी एक पोती हैं छोटी-सी, और उनके साथ वो जा रही थी, तो पोती जो उनकी छोटी है बहुत, और वो पूछ रही थी कि क्या भगवान जो है वो ये कुत्ते की बॉडी में है? कृष्णा क्या इसकी बॉडी में है? तो माताजी ने बोला हाँ। क्या ये इस पेड़ में है भगवान? तो माताजी ने बोला हाँ। तो ऐसे वो पूछती जा रही थी और पूछ रही थी, क्या भगवान मेरे अंदर भी हैं? तो माताजी ने बोला यस, भगवान आपके अंदर, आपके हृदय में भी हैं। तो वैसे ही माताजी बता रही हैं कि भगवान हर किसी के हृदय में है ना? भगवान डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, कि भगवान सिर्फ लव देखते हैं कि प्रेम कितना है, वो जीव मुझसे प्रेम कितना करना चाहता है। और प्रेम मतलब बता रही हैं माताजी कि भगवान का सेवा करना। हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम सेवा करते हैं उनकी। जैसे माताजी एक इंसिडेंट शेयर कर रही हैं कि वो किसी के बर्थडे पार्टी में गई थी और उन्होंने उनका बहुत ध्यान रखा। माताजी की हर चीज़ का टेक केयर किया। तो अब उन्होंने प्रेम जब जताया, तो माताजी अब अपना प्रेम कैसे जता रही हैं कि वो देख रही हैं कि अच्छा, इनका वॉशिंग बास्केट अगर टूटा हुआ है तो उसकी जगह नया ले आए। प्लेट अगर प्लास्टिक वाली है, वो नीचे गिर के टूट जा रही है, तो नया वाला उनको लाके गिफ्ट कर दिया। तो ये आदान-प्रदान जो होता है, ये जो सेवा जो माताजी कर रहे हैं, है ना? लव, ये लव शो करना होता है। वैसे ही माताजी बता रही हैं गार्डन, नीचे जो एक छोटा-सा आपने देखा होगा, भगवान के पास में माताजी ने बहुत सुंदर गार्डन बनाया था पिछली बार भी। माताजी बता रही हैं कि फिर जन्माष्टमी आया तो सब उस गार्डन पे चढ़ गए, तो प्लांट्स मर गए फिर। माताजी ने वापस गार्डन लगाया, और माताजी बता रही हैं श्रील प्रभुपाद बोलते थे, माताजी जो अभी गार्डन लगाए हैं उसमें एक-एक जो प्लांट है वो सूंघ-सूंघ के लाए हैं कि उसमें अच्छा खुशबू आना चाहिए, ताकि वो भगवान को ऑफ़र हो सके। श्रील प्रभुपाद बोलते थे जिस जिस फ्लावर्स में खुशबू नहीं आ रहा है, वो प्लांट कोई काम का नहीं है, वो भगवान को ऑफ़र नहीं हो सकता। तो ये होता है चेतना। चेतना यानी कॉन्शियस होना कि हम भगवान को कैसे सर्व कर रहे हैं अच्छे से, है ना? तो वो चेतना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम बड़े-बड़े मंदिर बना देंगे दिखाने के लिए कि ओह! मैंने इतना बड़ा मंदिर बनाया है, किसी का ये भाव हो सकता है। तो माताजी बोल रहे हैं कि हम वो मंदिर में क्या चेतना डाल रहे हैं, उसको कितना लविंगली, बहुत प्रेम के साथ कैसे रख रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भगवान वो देखते हैं। So just as much Prabhupada mentioned about the four qualities in the society, the four types of people. And he said, talking about the Sudras, the Kshatriyas, the Sudras, the Vaishyas, the Kshatriyas, and the Brahmins. And when Srila Bhaktisiddhanta Saraswati was here, the Brahmins, they said, my father is a Brahmin, and I've been born in the family of Brahmins, but so I am Brahmin. And he said, no, you are not Brahmin by name, you are Brahmin by qualification. And if you don't have the qualification, then you're not a Brahmana. Oh, they didn't like it. They even tried to kill him, chased him all through the forest. And one of his disciples said, Guru Maharaj, if I don't help you, they will kill you. So I will give you my clothes and I will wear your clothes, and then you will get away. So he did that. And Bhaktisiddhanta Saraswati, he turned into
into white clothes, and the boy, he turned in the saffron clothes, and they knew he wasn't him. Where did he go? Oh, I didn't see him. I only seen some greyhoster walking past. I don't know, maybe he got away, and so he saved Bhakti Siddhanta Saraswati's life. But in society, every person is important. The Brahmin is important. The Kshatriya, who's helping to protect us all, he is important. They are important. And the Vaishyas, they are important. The shopkeepers, the farmers. Without them, where will we be? And then we have the Sudras that come and clean our houses and sweep the roads and do so many things. So the rich man, he cannot do without having the lady come to his house and clean it, because he's so busy that he has to have the lady coming. And the lady does a nice job and he pays her well. And so everyone is important. There is no need to look down on anyone or treat anyone as insignificant, because as a soul, we are all equal, isn't it? Like that. तो माता जी ने एक इंसिडेंट शेयर किया कि कैसे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के पास में एक ब्राह्मण आए और वो बोले कि क्योंकि मेरी परंपरा में और मैं ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिया हूँ, इसलिए मैं ब्राह्मण हूँ। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जो हैं, उनको सिंह गुरु कहा जाता है। तो वो बोले नहीं, आप ब्राह्मण फैमिली में जन्म लेने की वजह से ब्राह्मण नहीं हो, आपके गुण अगर वैसे हों तब आप ब्राह्मण हो। तो वो ब्राह्मण को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उन सब ने क्या किया, उनको मारने के लिए योजना बनाई। अब जो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के जो शिष्य थे, उन्होंने कहा कि अगर आप मुझसे कपड़े एक्सचेंज कर लीजिए, अदरवाइज ये आपको मार डालेंगे। तो उन्होंने सन्यास के कपड़े पहन लिए और उन्होंने गृहस्थ के कपड़े पहन लिए। इस तरीके से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद वहाँ से निकले और फिर उस शिष्य से पूछा गया कि वो कहाँ गए हैं, ब्राह्मणों ने पूछा। बोले नहीं, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गए हैं। ऐसा करके वो इंसिडेंट हुआ था। बट जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, माताजी बता रही हैं कि चारों ही वर्ण बहुत इम्पोर्टेंट है। हमको किसी को ऐसा ट्रीट नहीं करना चाहिए कि आप महत्वपूर्ण नहीं हो, है ना? ब्राह्मण जो हैं वो हमें शिक्षाएँ देते हैं भगवान के बारे में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो क्षत्रिय हैं वो हमारी रक्षा करते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वैश्य जो हैं वो बिज़नेस और ये सब खेती और ये सब करते हैं, तब हम खा पाते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और शूद्र जो हैं वो सर्विस करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, है ना? माताजी बोल रही हैं कि अगर एक जो बहुत रिच इंसान है, बहुत जिसके पास पैसा है, अगर कोई उसके घर में आके क्लीनिंग नहीं करे तो वो उसके बिना नहीं रह सकता है ना? साफ-सफाई के बिना कैसे रह पाएगा? तो शूद्र भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उनको ये फ़ील नहीं करवाना चाहिए कि आप महत्वपूर्ण नहीं हैं। वैसे ही चारों वर्ण जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। Yes. So Krishna has the highest respect for everyone. And he doesn't say, this is a woman and I will not listen to her. But now in your country, there's so many women, they have high positions. Some of them are have their own businesses, are becoming CEOs, are becoming managers of different companies. Because in the Kali Yuga, the men become weak. The Prabhupada said the men become weak because of too much sex life. Because when it says in the Bhagavad Gita that from food grains, eating the food grains, which produce semen. So when a man doesn't let his semen go, it goes up to the brain and he becomes very strong. But in this Kali Yuga,
it's very contaminated. There's so much terrible things to watch on the internet to do with sex life. And that way, the men are spilling out their semen and they're actually spilling out their brains. So now it's become like that. Prabhupada said in the Kali Yuga, the women have more intelligence than the men just because of this one reason. And in that way, the women are becoming very, very intelligent. My son's girlfriend, she manages a big company. She's not the highest manager, but she's like the general manager, and she has to manage so many men. And she had to fire so many men. Tell them, I'm very sorry, because some of them weren't respecting her as being the manager. She manages one big company. They make doors and windows, and then she also travels to the same company in different branches of the towns in Queensland. And so she has a high position, but some of the men were being very disrespectful. And so she had to call them to the office and tell them that, you're not respecting me as being the manager here. And I'm very sorry. Because of that, we have to let you go. And she said already she has had to let 5 men go. And they realized that they'd made a mistake. And so they had lost their job. But the owners of the business, they say, very good that you are doing this. Yes, because it's like that. Some women become engineers, and you see them on the building site with the cap on, and they're going there to all the big workers, and they're instructing them what to do. So this is how it's become, that the women are more intelligent than the men, or equal, right? So this is a good sign. But yeah, that respect is still not there. So much trouble goes on in the community where the men accost the ladies. So I tell the ladies, you should learn martial arts. Yeah, you should learn martial arts. And one young girl, I know her from before, and she told me she has taken up martial arts now, because in India, it's so much trouble with men accosting women, rape, so much things. So I said, I'm so glad you're doing that, because I gave one class in one city after that, because I told the girls they should do martial arts. But then after that, the fathers, they didn't like me anymore, because I'm telling the girls to protect yourself. And yeah, and I said to them, I asked them, you take care of my bag? I'm coming back next time and I'll pick it up. Oh, no, we can't do that. The temple president told us we're not allowed to take your bag. And I said, oh, what is going on here? And then I said, I know what it is. You didn't like it that I told the girls to protect themselves. And therefore you're saying it's about a bag. And I told them off. You are rascals. And then they said, okay, we will pay for your bag to go to Chennai. And we know some very nice devotees there that will take care of your bag for next time you come to India. And that family is so wonderful. I go to stay with them every time. They do anything for me. Would never say to me, Mataji, don't you tell our daughters to do martial arts. Because I had that experience. I was 70 years old, now I'm 75. At 5 o'clock on Ekadashi, I was walking to the train station, and some young man did something terrible, and then he grabbed me on my breast
between my legs. In the morning at 5 o'clock, I'm going, oh my God, Krishna, what to do? So I got my bag and I beat him with my bag. And then I went to a house and there was little dogs barking and there was no fence. And I went in and I knock on the door. And the lady came out. I could hardly speak. I was so um, not afraid that I don't remember Krishna, but just that someone did that to you. It is so hard for a woman like that. And so that lady, she was a big lady, and she said, "Don't worry. It's just because you're not very strong that that boy did that. But if I was standing there, he would never touch me." So she was a big lady, right? So we have to defend ourselves in this Kali Yuga. We cannot think, I am a woman and I have to be like a little mouse and never say anything, right? No, we have to take care of ourselves. That's why I suggested the ladies to do martial arts. And now there's many martial arts classes. And sometimes on my Facebook page, there comes an Indian girl and the man is coming behind her and trying to grab her. So she knows this exercise. Down on the ground. Ah, fantastic. Beg your pardon? Spray, yes. But this girl, she knew how to knock him down. And I was very happy. So they are promoting this now. So you don't need to worry, girls. If you want to do martial arts, you do it, just to protect yourself. Mhm. तो माता जी ने बताया कि कैसे जो कृष्ण है वो ये नहीं देखते कि आप विमेन हो या कुछ भी हो, पर विमेन भी जो आज हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है मेन से, है ना? विमेन जो है वो ज़्यादा दिमाग रख रही हैं पुरुषों से आजकल। क्यों? क्योंकि जो पुरुष हैं, प्रभुपाद ऐसा बताते हैं और ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जो पुरुष का जो वीर्य होता है, अगर वो इसको निकाल देते हैं, अननेसेसरीली उसको बहा रहे हैं, तो उससे उनका इंटेलिजेंस कम होता है। तो आजकल जो पुरुष है वो वही कर रहे हैं, है ना? वेबसाइट पे जाके वो गंदी चीप फ़िल्में देखते हैं और उससे उनका वीर्य निकलता जा रहा है और वो लेस इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं। और वहीं पे आज जो महिलाएँ हैं वो ज़्यादा बुद्धिमत्ता रख रही हैं पुरुष के मुकाबले, इसी वजह से, है ना? तो जब पुरुष ऐसे वीर्य नहीं निकालते हैं, तो उनका वीर्य जब ऊपर की तरफ बढ़ता है, उसको एक हम बोलते हैं अधोगति और एक वो बोलते हैं कि वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो उनसे उससे उनका माइंड बहुत बढ़ता है ना? पर वो आजकल नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह से महिलाएँ जो है वो ज़्यादा बुद्धिमान हैं आजकल पुरुषों के मुकाबले। माताजी बता रही हैं कि कैसे उनकी जो एक गर्लफ्रेंड है, मतलब उनकी जो एक फ्रेंड है, वो बहुत बड़ी कंपनी चला रही हैं, उसमें बहुत अच्छी पोज़ीशन पे मैनेजर हैं और बहुत सारे जो पुरुष हैं, उनको वो जॉब से निकाल देती हैं कि आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। मतलब काफ़ी पावरफुल पोज़ीशन रखती हैं उसमें और बहुत इंटेलिजेंस से पूरा मैनेज कर रही हैं, है ना? बट उसमें से भी बहुत सारे मेन हैं जो उनको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि ज़्यादा इंटेलिजेंट अगर महिला है तो पुरुष उनको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, है ना? ये इंसिडेंट्स भी हैं। तो माताजी बोल रही हैं कि अगर इस तरीके से आपके साथ बिहेव होता है या आजकल महिलाएँ सेफ भी नहीं है ना, बहुत बलात्कार होते हैं, रेप हो जाते हैं। तो उस केस में माताजी बोलती हैं कि मैं टेम्पल में जाके जहाँ भी मैं जाती हूँ, तो मैं महिलाओं को बोलती हूँ, लड़कियों को बोलती हूँ कि आप मार्शल आर्ट सीखो। तो कुछ-कुछ टेम्पल्स में उनको अच्छा नहीं लगा था कि मैं महिलाओं को बोल रही हूँ कि आप अपने आप को सुरक्षित रखो। तो माताजी ने बोला कि यू आर रास्कल्स। रास्कल का हिंदी मुझे नहीं आता। तो इस तरीके से कि माताजी जहाँ भी जाती हैं वो ये प्रमोट करती हैं। वो अपना एक इंसिडेंट शेयर कर रही थी कि कैसे माताजी तो 70 प्लस हो चुकी हैं। ऐज उनका 75 हो चुका है अब वो, 75 साल की हो गई हैं। पर वो एक सुबह 5 बजे कहीं जा रही थी और स्टेशन पे उन उन पर कुछ लड़कों ने अटैक किया। उन्हें गलत तरीके से छुआ और फिर माताजी वहाँ से निकली और किसी घर में गईं जहाँ पे कुत्ता भौंक रहा था। तो वो उस घर में गई, उन्होंने नॉक किया
तो उसमें एक अच्छी बहुत बड़ी मतलब बिग लेडी, वेरी बिल्ड अप, काफ़ी, जब वो बाहर आई उन्होंने बोला कि आप डरो मत, है ना। माताजी वॉज स्केयर्ड ड्यू टू दिस इंसिडेंट, वो डर गई थी। तो उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे जैसे स्ट्रांग हो, मतलब मैं अगर होती आपकी जगह तो वो मुझे कभी नहीं छू पाते, क्योंकि वो बिल्डअप वैसा है। तो माताजी बोल रही हैं कि हमें वो मार्शल आर्ट और इस तरीके की चीज़ें सीखनी चाहिए अपना प्रोटेक्शन करने के लिए। Not only for the girls, for the boys too. I told my daughter, you put the children in martial arts so they can protect themselves. Right. Now it's 6:16, and have you any questions? Anything about anything? No? Come on, ladies, don't be afraid. All right. So you have understood everything. Is that right? Yeah, I've understood everything. So next time I come, you are going to be signing up for martial arts. And my little grandson, he's my adopted grandson, he lives in Mayapur, and one of his classes is martial arts. He was showing us, you do this and you do that, you know, how to protect yourself, even the boys. Really important. Yes. So, what is next? Did Prabhu get some prasadam for the girls? Yeah. You sure you haven't got a question? Not one little question? What was that?